हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स. आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदत अब्बास. हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 16 विच इज डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स. हमने खत्म कर लिया था ये चैप्टर का टेक्स्ट एंड वी स्टार्टेड अप विद द क्वेश्चंस इन द लास्ट लेक्चर. आज हम जो रेस्ट 4 क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स डू दैट. ओके, so the second question is, Nelson Mandela is a truly outstanding leader of the 20th to 21st century. Find out more about his life achievements and make a chart for your class. अब ये जो questions हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, they are very thought provoking questions. वो ऐसे questions हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, रिसर्च करने पे मजबूर करते हैं, and they train you for unexpected kind of questions and scenarios. Critical thinking एक ऐसा aspect है which develops through your life and it helps you throughout. अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में दे आर एक्चुअली सेइंग कि नेल्सन मंडेला इज अ आउटस्टैंडिंग लीडर. उसके बारे में आप इंटरनेट से या डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट बुक्स से सर्च करें कि उसकी फर्दर लाइफ अचीवमेंट्स क्या हैं. नाउ इफ यू गो बैक टू द लेक्चर इन विच आई डिस्कस नेल्सन मंडेला, आई गेव यू वैरायटी ऑफ फैक्ट्स अबाउट हिज लाइफ. आई रिसर्च देम ऑल्सो. आई एडेड फ्यू ऑफ देम विच आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द बुक. बट हाउएवर मैं आपको अभी इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ, जिसमें स्टार्ट की डेट्स और स्टार्ट की कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको बताती हूँ. एंड आई वुड वांट यू टू रिसर्च ऑन द सेम पैटर्न एंड फुलफिल इट till the timeline till he became the president or he won the Nobel Peace Prize, because his biggest achievement was the Nobel Peace Prize. Now, if we talk about his education, तो early education तो obviously it was there, but 1942 में he completed his BA from University of South Africa. 1944 में he co-founded ANC, which was African National Congress, and then later he was elected the president of African National Congress in 1948. Now in 1952, he was arrested and charged for violating act of discrimination. अगर आप लोगों को याद हो तो नेल्सन मंडेला एक ऐसा लीडर था who fought for the independence of Africa and also against the discrimination which was because of the color. ऐसी तफरकाबाजी जो इंसानी रंग की वजह से की गई थी, because they were black people or they were being ruled by Dutch settlers. Now moving on to this pattern, you need to add the dates and the main achievements he achieved. क्या किया, क्यों अरेस्ट हुए, नोबेल पीस प्राइज किस वजह से मिला, एंड देन व्हेन ही गॉट रिलीज्ड, फिर एएनसी ने मेजॉरिटी जीती, फिर देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, देन ही रिजाइंड. सो वन बाय वन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज यू आर टॉकिंग हियर अबाउट अ पर्सन हु स्पेंट हिज लाइफ इन प्रिजन टू मेक अ कंट्री इंडिपेंडेंट. सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लाइफ ही लेड एंड व्हाट सर्विसेज ही रेंडर्ड फॉर पीपल. सो यस, आप हर एक ईयर के साथ उनकी जो अचीवमेंट है आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए. आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 वेबसाइट्स इकट्ठे खोलें एंड देन यू स्किम थ्रू देम. उसमें से आप फैक्ट्स चूज करें. अब फैक्ट्स जहां वो मैच करेंगे, इसका मतलब है कि द इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक. प्लीज विकिपीडिया नहीं यूज करना. एंड देन यू राइट डाउन दोज फैक्ट्स in your own language, in your notebook or on a Word document, whichever is comfortable for you. So yes, this is how you're going to go about it. Start ऐसे दीजिए, फिर मेरा लेक्चर देखिए which is about the life of Nelson Mandela. पूरी एक लेक्चर मैंने इस पे दिया था. And then gather the facts from there. Further थोड़ी सी और मेहनत करके इंटरनेट से भी थोड़े से फैक्ट्स इकट्ठे कीजिए और फिर इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. Because it says to make a chart. चार्ट में आप लोग टाइमलाइन बनाइए. सोचिए और क्या तरीका हो सकता है. Excellent. Make a poster where you add bubbles और उन bubbles में आप लिखिए उसकी लाइफ की मेन अचीवमेंट्स, साथ में नीचे डेट्स लिख दीजिए. अब और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको फीजिबल लगता है, आप उस तरह से कीजिए. आपने पहले इकट्ठे करने हैं फैक्ट्स एंड देन फिर उनको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3. What qualities made Ataturk a successful leader for Turkey? कमाल अतातुर्क को किन क्वालिटीज की वजह से एक सक्सेसफुल लीडर कंसिडर किया जाता है ऑफ टर्की? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कह सकते हैं वो है उसकी ब्रॉडर थिंकिंग. याद कीजिए जिस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड कमाल अतातुर्क, वी डिस्कस्ड द फैक्ट कि ही वाज अ सिंपैथेटिक पर्सन, जिसकी वजह से बाद में उसने टर्किश लोगों को सपोर्ट भी किया.
Moreover, when he came into the power, he had to turn an old crumbling Ottoman Empire into a modern state Turkey. So उसके लिए उसकी अपनी broader thinking होना बहुत जरूरी था, because जब तक वो वसत के तौर अपने दिमाग को वसी करके इन चीजों को नहीं सोचेगा तब तक वो कोई चेंज नहीं ला सकेगा, और उसके सामने जो चैलेंज था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि it was not only about bringing political stability to country, it was also about economics, it was also about changing the people think. लोगों की ज़हनियत बदलना और उनको पुराने तर्ज जिंदगी से नए तर्ज जिंदगी पे लाना, ये उसका एक मेन मकसद था. He had great vision. उसको अपने ऊपर ये एतबार था कि he'll be able to turn an Ottoman Empire, an old crumbling one, into a new modern state Turkey. Then an outstanding communicator. He had outstanding communication capabilities. He was a good communicator. अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता था, तभी लोगों ने उसकी बात मानी. Internationally उसने टर्की की पोजीशन जो थी वो क्लियर की. So yes, he was an effective communicator. Then effective persuasion. Persuasion होता है लोगों को मनाना, दलाइल देके. So if he was not able to do that, तो शायद वो टर्की को दोबारा प्रोग्रेस की तरफ ना लेके आता. So yes, this was another of his ability. Self-assertion, open-mindedness. Self-assertion means कि उसको अपने ऊपर इतना एतबार था कि जो वो कर रहा था वो सही है और उससे अल्टीमेटली टर्की को फायदा ही होगा. Open-mindedness, उसको जो फेस करना पड़ा वो था एक रिलीजियस लैशबैक, क्योंकि लोगों को उस वक्त ये लगा कि अगर ये पुराना तर्ज जिंदगी बदल रहा है और मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहा है तो probably he is going against Islam, which was not the case in reality. So he had to be open-minded कि उसने सारे जो racist versions हो सकते हैं, जो discriminatory reasons हो सकते हैं, उनको साइड पे रख के सिर्फ मुल्क को ओवरऑल तरक्की की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, और जो कि हुआ भी. Transformational leader, as I gave examples earlier, you can go back to the lecture where I discussed Kemal Ataturk and you can look into the factors कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आए. ग्रेट डिसीजन मेकिंग पावर. डिसीजन मेकिंग पावर इसलिए बहुत अच्छी थी क्योंकि कमाल अतातुर्क को पता था कि ये जो चैलेंज इसके सामने है वो आसान नहीं होगा. सो ही मेड रुदलेस एफर्ट्स. उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में बहुत सारी चीज़ों को बदला, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्ड हिम इन मेकिंग टर्की प्रोग्रेस. So yes, you have to discuss each of these factors, each of these qualities in detail, giving examples from the decisions he took while he was in power. और वो आपको मिलेंगी मेरे पिछले लेक्चर में, so do go through it. From the internet and other sources, look up more detail about Myanmar's history and geography. Make posters as class project. अब this question is actually also enforcing कि आप अपनी research skills develop करें. And you do some research from internet and from other resources about Myanmar. अब Myanmar क्या था? Myanmar was the old name for Burma. If you talk about Myanmar, तो it was called former Burma, कि बर्मा का नाम बर्मा पढ़ने से पहले म्यांमार था. इसकी जो हिस्ट्री है, it dates back to 13,000 years ago. जो ह्यूमन सेटलमेंट्स 13,000 साल पहले हुई थी, उनका अंदाजा ये लगाया जाता है कि दे वर इन दिस प्लेस म्यांमार. सेटलमेंट्स थी, पीपल सेटल्ड इन दिस एरिया ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद व्हेन दे सेटल्ड, एग्रीकल्चर किया, ट्रेड की, डेवलपमेंट की. देन केम द मंगोल्स. मंगोल्स ने इस एरिया को इन्वेड किया. इन्वेड करने के बाद दे गॉट सेटल्ड देयर एज वेल. किसी भी जगह की इन्वेजन इस वजह से होती है कि वो कितना वेल सेटल्ड है, वो एरिया कितना डेवलप्ड है, ये किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है. सो यस, द मंगोल इन्वेजन. देन देयर वर सेवरल डायनेस्टीज. मंगोल के बाद एक डायनेस्टी आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी. देन यू टॉक अबाउट लास्टली अबाउट द ब्रिटिश रूल. जो लास्ट रूल बर्मा के ऊपर किया वो ब्रिटिशर्स ने किया, एंड देन बर्मा फाइनली बिकेम इंडिपेंडेंट. आपको इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में सर्च करना है, एंड देन यू हैव टू मेक अ पोस्टर जिस पे आप टाइमलाइन वाइज चल लो, आप मेजर इवेंट्स वाइज चल लो. आई गेव यू मेजर इवेंट्स विदाउट द टाइमलाइन. यू कैन ऐड टाइमलाइन टू इट एंड ऐड डिटेल टू ऑल दीज फैक्टर्स. और तरीका आप वही करेंगे जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि रिसर्च करने के लिए आप किस तरह इंटरनेट रिसर्च करते हैं. प्लस यू कैन गो टू योर स्कूल्स लाइब्रेरी.
और अब तो ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें से आप इसके ऊपर एलैबोरेशन, मजीद फैक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे करके लिख सकते हैं. Question number 5. It says, name some of the humanitarian organizations in Pakistan and write briefly about their work. Now, if you find out the names of few organizations, probably आप में से कुछ को पता भी होंगी, why don't you just pause the video and write down the names of the organizations you know? Excellent. Now, I have a list with me. इससे ज़्यादा भी organizations हैं, but I just wanted to discuss a few. Transparent Hands एक है. It works for the youth. For people, it helps them. It's a charitable organization. ये पैसा लोगों से इकट्ठा करती है and then it helps the people who are needy. Eidhi Foundation, as you all know, Eidhi Foundation was found by Abdul Sattar Eidhi, a person who gave his life while serving people. He set up Eidhi homes. He set up different charitable places where people could give money or help people who are in need. Shaukat Khanum Cancer Hospital Trust. Now this is a hospital or a trust which works for the cancer patients. So यहाँ पे जो भी donations दी जाती हैं वो cancer patients के treatment के लिए use होती हैं and the needy or the worthy patients are given free treatment. Aurat Foundation, this specifically works for female women rights. ये women rights के लिए काम करती है उन औरतों के लिए जो domestic violence का शिकार होती हैं, उन औरतों के लिए जिनके पास कोई घर नहीं होता या जो किसी नेचुरल डिजास्टर या किसी हादसे की वजह से अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं या उनकी फैमिली नहीं रहती. शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, इट ऑल्सो वर्क्स फॉर विमेन राइट्स एंड फॉर द चिल्ड्रन. देन एहसास फाउंडेशन, इट इज अनदर फाउंडेशन विच वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड विमेन राइट्स. सो यस, ये कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं. दे आर चैरिटेबल फाउंडेशंस जो लोगों से डोनेशंस लेके पैसा इकट्ठा करके उन लोगों की मदद करती हैं विच आर इन नीड. नाउ हेयर वी एंड द चैप्टर 16 विद इट्स क्वेश्चंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.